Zubair, Smriti, Tanu. Good afternoon. Good afternoon. This session. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. विकास हो गई है. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. Okay, so we will be starting our session now. Let me give you some brief. Okay, अभी check करो संतोष. Is that okay now? All right. Yes, sir. Okay, so percentage, we have seen some basics of percentage in which we have seen some basic structure like A is what percentage of B, A is how much percent more than B, B is how much percent less than B. Okay, so good afternoon Ji, good afternoon. Okay, for example, if I say I have a number A which is 200 and B which is, let's say, 300. Okay, now my question is, A is how much percent less than B? Give the answer in the chat box. 100. A is how much percent less than B? 10%. A is how much percent less than B? A is how much percent less than B? Shivam is saying 50. Okay. Arman 10. Anjali 30. Yes. Anjali have given the correct answer. 33. Yes. Ayush, Rohit. Good. 33.33% would be the answer. Very good. Ritu. Good. A is how much percent less than B? So first of all, we need to check A is how much less than B. Okay. So first of all, how much? Okay. Divide by from which? Multiply by 100. So from this structure, you can solve it easily. How much and from which? So first of all, A is how much percent less than B. So I need to check how much less. So A is 100 less than B. Divided by from which? So A is less than B. So focus on then. So we are comparing it with B. So B will come in the denominator, multiply by 100. So the answer would be 33.33%. Right? Okay. Similarly, if I ask you that B is how much percent more than A? B is how much percent more than A? More than A. Then what would be the answer? Okay, Ritik 50, Zubair 50. Okay, good. Ayush 50. Sir, 50. 50. Correct. Good, Ritika. 50 would be the answer. So again, how much upon from which? So how much more? So B is 100 more than A. And from which more? So B is more than A. So then A will come in the denominator. Neetu, A will come in the denominator this time, okay? Huh. So 100 upon 200 multiplied by 100. So that would be 50%. Right? 0, 0, 0, 0 cancel out. 100 by 2, 50%. So we have seen some basic concept of percentage. Then we have talked about some fractional values like 9.09%. What is 9.09%? It is 1 by 11. Okay. So if I ask you, I have a number 5544 and this number is increased by 9.09%. So what will be the new number? Okay. This is my number 5544. And now this number is increased by 9.09%. So what will be the new number now?
504. 504. 5114. 50. Who is this? You can just mute yourself, everyone. Excuse me, sir. You are not audible. Okay, check now. Am I audible? Yes, sir. Am I audible now? Okay. All right. So 9.09 is 1 by 11. See, you can just mute yourself, huh? Everyone. 11 is the initial value and 1 is the increment. So here we can say that 11 unit is corresponding to 5544. So from here we can find the value of 1 unit. So 1 unit would be 504, right? 11 5 is 55, 0, 11 4 is 44. So there is an increment of 1. So if initial is 11, 1 is the increment, so final would be 12, right? So we need to find the value of 12. So 12 would be 12 into 504. Or you can just add this plus this. You will get the result, right? 6049, correct. 6048. 12 4 is 48 and 12 5 is 60. So 6048 will be the answer. Good. Okay, then we have seen the successive percentage, the net effect. Okay, the net effect formula. What was the net effect formula? It was like A plus B plus A into B divided by 100. Okay, this formula gives you the net effect actually. What is net effect? For example, if I give you an example, I have a number 100 and this number is increased by 20% and then this number is decreased by 10%. So what will be the effect on the number? What will be the number now? Can you tell me what will be the number? 108. Okay. 108. 108. Okay. So simply, since the values are very, very easy, so you can do it easily. Otherwise, you can use the formula as well. Here the value of A is 20% and B is minus 10. Okay. So just put these values in the formula. You will get the result. Okay. So put A is equal to positive 20. So you will get 20 minus 10 plus 20 into minus 10 divided by 100. Right. So 20 minus 10 gives you 10. And 0 0 0 0 cancel out. 10 minus 2, so 10 minus 2 would be 8%. So actually there is an increment of 8%. So initial value is 100, so final value would be 108. So there is an increment of 8%. So 8% is the net effect, right? 8% would be the net effect. Clear? कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले नंबर 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो अल्टीमेटली ये 8% ही इंक्रीज हुआ. ये कहने का मतलब है नेट इफेक्ट से. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आपको ऐसी कुछ वैल्यूज दे दूं कि वी हैव अ सर्टेन नंबर एंड फर्स्ट इट इज इंक्रीज बाय 33.33 and then it is increased by 6.66%. Okay, what will be the final value now? If the initial value, let's say 100 or any other number, you need to find the net effect actually. What will be the net effect here? Okay, so now it will be a bit tough if you put these values in the
फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई 100. सो ये ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, so that's why fractional values are very very important in this case. So 33.33 is 1 by 3, okay, and 66.66 is nothing but 1 by 15, okay, all right. So 1 by 3 and 1 by 15. So basically there is an increment of 1. So initial and final, initial and final, okay. So if I talk about 1 by 3, so this is initial value 3 and 1 is the increment. So initial is 3, final will be 4, right? Here in this case, successive. So one after another. So initial is 15 and final will be 16, right? So you need to just multiply these values. So 15 into 3, 45, and here it would be 16 into 4, 64. So this is the initial value, 45. This is the final value, 64. You can now check 64 is how much percent more than 45. Tell me the answer. Give me the approximate answer. 64 is how much percent more than 45? How much percent, Ritu? Percent. 20%. 20%. Okay. No. 64 is how much percent more than? Again, the same basic. How much upon from which? Multiply by 100. Okay. कितना ज़्यादा है और किससे ज़्यादा है? Yes, it would be around 40%, right? 42. Yes, correct. See, first of all, 64 is how much more than 45? So 45 plus 5 gives you 50. 14 and 5, 19. So it is 19 more than. So more than from which? किससे ज़्यादा है? 45 से ज़्यादा है, तो डिवाइड बाय 45 इंटू 100. ओके, ये आपको सॉल्व करना है. नाउ यू कैन कैंसिल आउट बाय 5. 5 9 जो एंड 5 20 जो, ठीक है. अच्छा, 9 2 जो 18 अप्रॉक्सीमेटली. 9 2 जो 18, राइट. पॉइंट 9 1 जो 9. So approximately it will be 22 जो 40, 40.2. Okay, 42. Okay, so it will be 42% approximate, right? So I hope it is clear. Now I'm coming to a few questions based on successive, right? Guys, try this one. Not audible. ये check करो, am I audible now? Yes, sir. Okay, okay. Okay. Go for it. How would you solve it? If a length of a rectangle is increased by 20% and width is decreased by 30%, then find the resultant change in the area. How would you solve it? Okay, Ritik is saying A. You can use a net effect change. Okay. 2 to 3 methods for it. कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है. एक तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100
ये आप लगा सकते हो, ठीक है. Here for this particular question we have the value for a is positive 20, since it is increased तो इसको positive 20 ले लो, b decrease so negative 30, right, and put both values in the formula, you will get the result, right. So if you put these values, what you will get, 20 plus minus 30, right, 10 plus 20 into minus 30 divided by 100, right. So 20 minus 30 gives you negative 10 plus 0, 0, 0, 0, 3 to the 6, it will be negative 6, so minus 16. This minus sign indicating the decrement. There is an overall decrement in the area will be 16%. Is that okay? Hope it is clear. With the help of formula you can do it, okay. But what is the general approach? Now look at that. General approach is, let's assume we know that the rectangle is this, the shape of the rectangle is this, where length and breadth. So let's assume the length is 20, okay, or just take it as 100 for easy calculation. Length is 100 and breadth is 50, okay. So if I take length 100, breadth 50, so what will be the area? In that case, area will be L into B, length into breadth, it is 100 into 50 would be 5000. अगर मैं 100 and 50 लेके करूँ तो ये एरिया बनेगा, ठीक है. Now new area क्या है? Length of the rectangle increased by 20%. So now new length is 20% increment, 120. Okay, and breadth is decreased by 30%. So 30% less. So 50 का 30% कितना होगा? 15. So 15 less means 35. Is that okay? 35 इसकी नई breadth बन जाएगी. And now according to that you can calculate the new area. ओके, यहाँ से नया एरिया मिल जाएगा, ठीक है. तो ये क्या जाएगा आपका 0, 12 5 जो 60 कैरी 6, 12 3 जो 36 प्लस 6 42. ओके, सो अब देखो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो. यू कैन कंपेयर द वैल्यूज नाउ दैट इनिशियल एरिया इज 5000, फाइनल एरिया इज 4200. सो व्हाट इज द चेंज इन द एरिया? चेंज कितना हुआ? 800 कम हो गया. किस में कम हुआ है? 5000 में कम हुआ है. मल्टीप्लाई बाय 100, right, multiply by 100. So 0 0 0 3 zeros cancel out कर दिया, बचा कितना? 5 2 जा 10, okay. So 8 2 जा 16, so 16% ultimately it is decreased, right. So 16% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो ये अप्रोच भी आया समझ में. इजी वैल्यू आप ले सकते हो, 100 ले लो, नॉट एन इशू. सर इस अप्रोच से तो पता नहीं चल रहा कि डिक्रीज है कि इंक्रीज है. देखो पता चल रहा है ना, ये 5000 है और ये 4200 है, तो डिक्रीज ही तो हुआ है. है ना. दिस इज प्रीवियस एरिया, दिस इज न्यू एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है. तो अल्टीमेटली इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है. ओके, अच्छा, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि 20% इंक्रीमेंट. सो 20% इज नथिंग बट 20 by 100 विच इज अल्टीमेटली 1/5, राइट. ठीक है. व्हाट इज 30%? वी नो दैट 30% इज 3/10, राइट, 3/10. सो यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट और यहाँ पे हो रहा है डिक्रीमेंट. सो हाँ, अगेन वही चीज, इनिशियल और फाइनल. तो इनिशियल 5 था, फाइनल क्या हो गया? 6, ठीक है. सेकंड केस में इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना हो गया? 7, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है. 10 में 3 लेस हो रहा है तो 7 बन जाएगा, ठीक है. अब वही अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर दो. सो 10 5 जो 50 एंड 7 6 जो 42. तो देखो ये है आपका इनिशियल, ठीक है, और ये है आपका फाइनल, राइट. इनिशियल वैल्यू इज 50, फाइनल वैल्यू इज 42. तो कितना डिक्रीमेंट हुआ? 8 का. किस में डिक्रीमेंट हुआ? 50 में. मल्टीप्लाई बाय 100. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. यू हैव मल्टीपल अप्रोचेस. 16%. लॉजिक आया समझ में? Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, गुड.
Okay, go for the next one. Try this. Harman, you can just mute yourself. Last one is easy. Okay, it's up to you. Go for it. So Ritik is saying C, okay. Rajavi is 800 C, okay. देखो हर तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. Again 15% is corresponding to 15 upon 100, right, which is 3 by 20, right. It is increase, so plus 3 by 20. Second percentage values we have 20% increment, so 20% is nothing but 1 by 5. Since it is decreasing, so negative sign, right. First value goes from 20 to 23, and next value goes from 5 to 4, right. Multiply these values. 5 to 10, initial value is 100 and final value is 4 3 12, to carry 1, 4 8 plus 1 9. So ultimately there is a decrement of 8. Okay. Now according to question, this 8 is nothing but 64. Actually it is 64 less than the original number, right. And here it is 8 less than the original number. So this 8 is corresponding to 64. So 1 unit is corresponding to 8. 64 by 8, which is 8, right. So 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8. हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है. तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये ओरिजिनल नंबर था इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल नंबर था, ठीक है 100. तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 800. सिंपल. एनी डाउट? ये मेरा इनिशियल था, ये फाइनल था. तो कोई डाउट है सो यू कैन आस्क. Clear? Good. All right. Moving to the next one. Okay. Manjot is saying repeat. देखो मंजोत ये वाला ओके. सबसे पहले तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई है कि कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है. ये कन्वर्जन तो क्लियर होगा. 15% एंड 20%. अब वैल्यू कहाँ से क्या गई, डिवाइड क्यों करा. नहीं, मुझे 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ था 64. सो 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा ना. देखो 8 यूनिट, ये देखो एक्चुअल में यहाँ देखो कितना कमी हुई है. 100 से 92 गया, कितना कम हुआ है 8, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 64 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. अब देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ ओरिजिनल नंबर कितना है 100, ठीक है. यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कितना है 100 और यहाँ कितना मिला मुझे फाइनल नंबर 92. देखो कितने की कमी आई है 8 की, ठीक है. 8 की कमी आई है. मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर मैं नंबर लूँ 100 तो मेरे को 92 मिलेगा, ठीक है. तो 8 की कमी आई है. अब एक्चुअल में कितने की कमी आई है, यहाँ एक्चुअल क्वेश्चन में 64 की कमी आई है. तो मैं इस कमी को 64 के इक्विवेलेंट कर दूंगा कि 8 यूनिट की वैल्यू या 8x की वैल्यू 64 है, ठीक है. तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 बाई 8, जो कि होगा 8. तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी थी. देखो एक्चुअली ये क्या है, ये 100x है, ये 92x, ठीक है. ये 100x है और ये 92x है. दोनों का डिफरेंस 8x. 8x का वैल्यू 64, तो x का वैल्यू हो गया 8. तो 100x का वैल्यू 800, राइट.
ये मतलब है क्या? कौन सा सेकंड स्टेप? ये डिफरेंस दोनों का क्लियर? क्या? आई होप इट इज क्लियर. ओके, गो फॉर इट. 23/4 कहाँ है? ये 23/4 नहीं है, ये वैल्यू है 3/20. तो 20 से 23 गया, ये इंक्रीज कर रहा है. तो ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू होती है. अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो पहले आप वो रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? 20 से 23 और ये 5 से 4 गया, ये ऐसे हुआ. ओके, गो फॉर इट. अदिति, कल जो प्रेजेंट नहीं था वो प्लीज लास्ट डे की रिकॉर्डिंग चेक कर लो. आपको उससे समझ आ जाएगा कि मान लो अगर मैं कहता हूँ 50% है, 50% का वैल्यू 1/2 है, ठीक है? तो ये 2 होता है इनिशियल वैल्यू और ये होता है इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगर कोई वैल्यू 2 रही होगी इनिशियली तो अब वो 3 हो जाएगी, एक का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है? अगर मैं कहूँ डिक्रीमेंट हो रहा है 50% का, तो अगर कोई इनिशियल वैल्यू 2 रही होगी तो 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो 1 रह जाएगी. तो ये वैल्यू है इनिशियल और ये वैल्यू है फाइनल, ठीक है? गो फॉर इट. See, if I look at this question, in this question 3 variables are given. ठीक है? क्या क्या चीजें given है? Price and consumption and expenditure, right? So what is the relation between price, consumption and expenditure? Which is price into consumption would be expenditure. ठीक है? अगर मैं कहूँ कि भाई कोई चीज 10 रुपीज पर केजी है तो ये उसका प्राइस हो गया और कंजम्पशन मेरी खपत है 4 केजी, 4 केजी. सो मेरे को टोटल प्राइस कितना पड़ने वाला है? 40 रुपीज. ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है? जस्ट वेट. ओके. Okay, so this is the relation between price, consumption and expenditure, right? अब उसने देखो क्या बोला, if the price of the petrol is increased by 20%, अब ये 20% increase हो गया, ठीक है? Now, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर को सेम रहना है, उसने बोला एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा, कितना परसेंट लेस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको मैं बहुत सारे तरीके मेरे पास सॉल्व करने के, मैं 100 लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम we know that price into consumption is equal to expenditure. So let's assume price of the petrol is 100 rupees per liter and मेरा consumption भी क्या है? 100 है, ठीक है? जो कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है? 100 ले लिया. सो एक्सपेंडिचर वुड बी 100,000. खर्चा मेरा इतना ही रहेगा, ठीक है? अब प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 20%, सो प्राइस कितना हो गया? 120, ठीक है? अब कंजम्पशन कितना करना होगा सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम? तो एक्सपेंडिचर तो इतना ही रहना चाहिए. तो आप मुझे बताओ इस टाइम पे कंजम्पशन कितना होगा? तो 120 इंटू समथिंग गिव्स यू 10,000. सो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 10,000 अपॉन 120. यस, एग्जैक्टली. ओके, तो कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन जो होगा वो कितना होगा? 10,000 अपॉन 120, ठीक है? 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं, 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 3 जो 12
and here it is 4, 2 is 8, 4, 5 is 20, 250 by 3, right? So it would be 250 by 3 or 3, 3 8 is 24, right? 1, 3 3 is 9, 83.33, right? So मेरा न्यू एक्स जो कंजम्पशन था वो कितना आ गया 83.33. अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा कंजम्पशन इनिशियल कंजम्पशन था वो 100 है, न्यू कंजम्पशन इज 83.33, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 16.66. इज दैट ओके? इनिशियल कंजम्पशन वाज 100, नाउ इट इज 83.33, सो इट इज डिक्रीज बाय 16.66. इज दैट ओके? ये चीज आई समझ में? Yes, sir. ओके, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो. फाइन. ऑल राइट. ओके, आप इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा. कोई एक मेथड पकड़ लो. हाँ हाँ, फॉर्मूला भी है, बिल्कुल है. नेट इफेक्ट जो मैंने बताया था कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, दिस इज इक्वल टू नेट इफेक्ट. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि नो चेंज इन दी एक्सपेंडिचर, मतलब नेट इफेक्ट जो है वो जीरो रहना चाहिए. नेट इफेक्ट कितना रहना चाहिए? जीरो. इज इक्वल टू ए. अब ए इंक्रीज हो रहा है प्लस 20% से, सो जस्ट टेक द वैल्यू ए इज इक्वल टू प्लस 20 एंड बी को डिक्रीज करना है, सो लेट्स अज्यूम बी इज इक्वल टू माइनस एक्स. बी इज इक्वल टू माइनस एक्स. जस्ट पुट these values in the equation, you will get the answer 20 plus minus x plus 20 into minus x divided by 100. अगर आप यहाँ से x के लिए सॉल्व करोगे you will get the result. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि नेट इफेक्ट जीरो रहना है. जीरो क्यों लिया मैंने यहाँ पे? क्योंकि इसने कहा है नो चेंज इन दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, मींस नेट इफेक्ट मस्ट बी जीरो. तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. ठीक है, जस्ट चेक इट, यू आर गेटिंग द वैल्यू और नॉट. ऋतिक, yes guys, are you getting the value? Shivani, please check now. Am I audible? Okay, I hope you got it. Now, coming to the next one. Okay, try this one. This is again the same one. This is again the similar question. This one or the previous one? धीरज कौन सा? Okay, done. ये कर लो. Go for it. Price, consumption, expenditure. Again, you can go by the formula, or you can use the approximation method where you can use the values 100, right? बताने की जरूरत तो नहीं है. ठीक है. Expenditure remains same, so net effect must be zero. So A decrease by, so minus 12.5. Okay, plus x plus
minus 12.5 into x divided by 100. Solve for x. Okay, I hope it is clear. Right, 14.28. Yes, that is correct. 14.28 would be the correct answer, right? Okay. This is again the similar one. If the price of the commodity is decreased by 20% and consumption is increased by 20%. Okay. So what will be the change in the expenditure? So A is equal to minus 20, B is equal to plus 20. 4% Minus decrease. 20. Yes, correct. Plus 20 into minus 20 divided by 100. Okay, you can go by the formula 4% minus 4%. So 4% decreased. Option number B. Right? Okay, good. केस में एक चीज में ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है. ओके, ट्राई दिस वन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. गो फॉर इट. Price to expenditure, right? So price of the sugar increased by 25%. So price is 25%. Now, how much percentage consumption should be reduced? ये कितना reduce होना चाहिए? So that the expenditure increased by only 5%. So expenditure is plus 5. So net effect must be 5. ऐसा मत करना कि आपने इन दोनों में सक्सेसिव लगा लिया, 25% देखा, 5% देखा और नेट इफेक्ट लगा लिया. नो, ये रॉन्ग हो जाएगा. बात आ रही है समझ में? दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच? दिस 5% इज एक्चुअली द नेट इफेक्ट. इफेक्ट 5 इज इक्वल टू 25 into minus x divided by 100. That clear to you? इक्वल में है ना एक्सपेंडिचर. So this is net effect. Here Yes, voice sir. is low. Okay. Rupali, please check now. Okay, C option is, yeah, D. So 25 minus 5 gives you minus 20. That would be equal to minus x 100 minus 125x divided by 100. So minus minus is going to be cancelled out. 25 5 ja 25 4 ja and 5 5 ja 20 5 4 ja 20 and 4 4 ja 16. Yes, correct. C option. C is correct. Very good. Now coming to the different type of question. Just wait. Now the next category is based on marks. Category is based on marks. ये ले लो शुभम. See, you can check the recording as well, right? Okay, go for it. Ritik, very good. 500. 500. Student has scored 140 marks and still failed by 35 marks. If the passing criteria of the exam is 35%, then find the maximum marks of the exam. 500, very good. Okay, उसका 140 मार्क आया, लेकिन वो स्टिल फेल हो गया 35 से. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पासिंग मार्क्स कितने रहे होंगे? 140 प्लस 35, क्योंकि अगर वो 35 और लाता तो वो पास हो जाता. So these are the passing marks, right? These are the passing marks. 140 plus 35, right? And what is the passing percentage? The passing percentage is 35%. It means these marks are 35% of the maximum marks. 35% of maximum marks. Okay? यहाँ से मैं maximum निकाल सकता हूँ, ठीक है? So 35% of the maximum marks, let's say x, is 140 plus 135. So that would be 437, 175. From here x would be 175
divided by 35 multiplied by 100. Okay, so 35 5 is 175 and x would be 500. So 500 is the answer, right? Any doubt in this? Anyone? तो 140 marks आए, 35 से fail हो गया. So it means the passing marks are 175, and that is actually the 35% of the maximum marks. Good. Okay, coming to the next one. Go for it. Ritik 40. Okay. Student scored 25% marks in the examination and failed by 30 marks. ठीक है, तो देखो 25% किसका? Maximum marks का. So let's assume the maximum marks is x. Maximum marks is x, right? So उसका 25% marks आया, 25% of x. ठीक है, इतना लिया. फिर भी वो 30 marks से fail हो गया. It means if he got 30 more marks, he got pass. So these are the passing marks. ठीक है, ये passing marks हो गए 25% plus 30. Another candidate scored 50% marks and get 20 marks more than the passing marks. अब उसके कितने हैं? Second student का 50% of x, but he got 20 marks more than. So if I subtract 20 from it, this is also equivalent to passing marks. So both are equal. Simple as it is, right? ये भी passing marks हो गया, ये भी passing marks हो गया. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. सो इधर से 50% है, इधर 25% है. इफ आई 25 टेक 25 हियर, सो आई विल गेट 25% ऑफ x. ठीक है, ये बच गया. 50 में से 25 लेस कर दो. अब ये 20 इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 30 प्लस 20 50. ओके, सो 25% का वैल्यू 50 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 200, राइट? ये कैलकुलेशन आपके पार्ट पे छोड़ रहा हूँ. 1/4, so 4 into 50 200. So it means the maximum marks is 200. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पासिंग परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए. तो यहाँ x का वैल्यू ये रखो, ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, तो x, if I put x is equal to 200, so 25% of 200 would be 1/4 550, 50 plus 30 80. ठीक है, तो पासिंग मार्क्स जो है वो 80 है. पासिंग मार्क्स 80. पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 200 here or here. इन दोनों में से कहीं भी रखो, you will get the result. So पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 80. अब ये जो 80 है, ये एक्चुअल में कितना परसेंटेज है मैक्सिमम मार्क्स का? कैसे निकालेंगे? 80 by 200 into 100, राइट? सो दैट वुड बी 0 0 0 0 कैंसिल आउट. 40%. 40% is correct. Any doubt? I hope it is clear. So this is one of the variety which is based on marks. Now let me jump to the another category directly. Okay, go for it. This question is based on Venn diagram. Go for it. "52% candidates failed in English, 42% in maths, and 17 in both. So what is the number of percentage of pass student in both the subjects?" देखो, अच्छा अगर मैं कहूँ कि एक क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इन 12 स्टूडेंट्स में से 10 लोगों को टी पसंद है और 5 लोगों को कॉफी पसंद है. क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि 12 स्टूडेंट्स में से 10 likes tea and 5 likes coffee? Is it possible? Yes, sir. Why? How it is possible? Because sir, जिनको टी पसंद है, coffee भी पसंद होगी. हाँ,
हो सकता है कुछ स्टूडेंट को दोनों चीजें पसंद हो, ठीक है। तो वेन डायग्राम में यही हम शो करेंगे। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इंग्लिश के लिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैथमेटिक्स के लिए। सो दिस सर्कल रिप्रेजेंट इंग्लिश, दिस सर्कल रिप्रेजेंट मैथ्स। और ये फेल होने वालों के लिए, बिकॉज हियर द डेटा इज गिवन रिस्पेक्ट टू दी फेल्ड स्टूडेंट्स, राइट। अब 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। सो इस वाले सर्कल में, जो इंग्लिश वाला सर्कल है, उसमें टोटल वैल्यू आना चाहिए 52%। मैथ वाले सर्कल में कितना आना चाहिए? 42%। एंड इन बोथ देयर इज 17%। सो ये जो वैल्यू है इन द मिडल, दिस इज 17, राइट, दिस इज 17%। ओके, अब इस सर्कल में कितना आना चाहिए? 52। 17 इज ऑलरेडी देयर, सो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? 52 माइनस 17, सो दैट वुड बी 5 एंड 4 माइनस 1 3, 35%। ओके, सो 35% ऐसे होंगे जो कि केवल इंग्लिश में फेल होंगे, राइट। वी हैव 42% फेल्ड इन मैथ्स, 17 ऑलरेडी है। देखो इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 17 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो 42 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 5 एंड 3 माइनस 1 2, 25%। ये चीज आ रही है समझ में? तो 35% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि केवल इंग्लिश में फेल होंगे, ओनली इंग्लिश, एंड 25% ओनली इन मैथ्स, राइट, ओनली इन मैथ्स। अब केवल ये देख लो कि कितने परसेंट लोग फेल हैं। अब ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाई है फेल वालों के लिए बना, तो फेल कितने हो गए टोटल? 35 प्लस 25 प्लस 17, इतने लोग तो फेल हैं। ओके, तो फेल कितने हो गए? 35 प्लस 25, 60 60 70 77, 77% जो है वो फेल है, ठीक है। तो आउट ऑफ टोटल 100%, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स की? 100%। इफ 77% आर फेल्ड, तो पास कितने हो जाएंगे? पास हो जाएंगे 100 माइनस 77, दैट इज 23। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। यस अपनीत, करेक्ट। शुभम, आयुष, वेरी गुड। ऋतिक, आई होप ये टाइप भी आपको समझ आया होगा, जिसमें हमें क्या गिवन है? वेन डायग्राम, डेटाबेस क्वेश्चन। ओके, सो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। ये जरा करो, ये ट्राई करो, ट्राई दिस वन। ओके, ई, ताजवीर, सी, निजामुद्दीन, निश्चय, देव, अपनीत, 500 500, everyone is getting the value. Okay, Priya, please check now. Am I audible now? Okay, all right. Okay, let's see here. We have two subjects here in an exam. 70% passed in English and 65 in mathematics. So this Venn diagram is for who are pass, right? So one is for English, one is for maths. So in English, the total percentage is 70%, maths is 65%, right? But the data is given
regarding the fail here, so 27 failed in both. Now, if out of 100%, 27% failed in the exam, so how many students passed in the exam? So that would be 73, right? 73% स्टूडेंट्स would be there which are passed. ठीक है, अब ये 73 कौन से होंगे जो कि इन तीनों जगहों पे आएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ कि जो भी इन तीनों जगहों पे आएगा वो कितना होगा? 73। जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखो, सम ऑफ ऑल दीज थ्री विल इक्वल टू 77। ठीक है, अब ये बीच वाली वैल्यू आप x ले लो, जस्ट टेक इट एज अ x, दैट x% स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो ओनली इंग्लिश वाले कितना हो जाएगा? 70% माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? 65 माइनस एक्स। ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल दीज थ्री 1 2 3 मस्ट बी इक्वल टू 73। आई होप ये चीज कर लोगे आप। ठीक है, तीनों का सम करके 73 अगर मैं करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे। सारी वैल्यू परसेंटेज में है, राइट? तो 70 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स इज इक्वल टू 73। ओके, ऑल आर इन परसेंटेज, सो परसेंटेज मैंने कैंसिल आउट ही कर दिया। ठीक है, नाउ 70 प्लस 65 135, so 135 माइनस एक्स वुड बी 73। सो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 2 7 7 6 62, राइट? तो एक्स का वैल्यू 62 है, मीन 62% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? इफ 248 कैंडिडेट वर पास इन बोथ सब्जेक्ट, अब ये जो 62 है इसका वैल्यू मुझे गिवन है 248। 62% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 248। ये 62% किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ये आपको 248 गिवन है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 62 इंटू 4, तो 1% का वैल्यू 4, तो 100% मीन्स 100% स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 400। 400 इज द आंसर गाइस, नॉट 500। ये चीज आई समझ में, या शुड आई रिपीट वंस अगेन? ओके, आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संतोष इज सेइंग रिपीट। ओके, तो ऐसा करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये चलो मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्जेक्ट्स हियर, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ये पास होने वाले के लिए, ये ध्यान से देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। पास के लिए मुझे डेटा गिवन है, वन इज फॉर इंग्लिश एंड वन इज फॉर मैथमेटिक्स। दिस इज इंग्लिश, दिस इज मैथ्स। अब 70% कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश, तो इस वाले सर्कल में 70% डेटा आना चाहिए, इस वाले सर्कल में 65 आना चाहिए। ठीक है, ये है। अब 27, अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है ना, वो मुझे फेल वालों के लिए दिया भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब फेल वालों को तो मैं सर्कल में नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये पास वालों के लिए है। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ टोटल 100% स्टूडेंट्स 27% आर फेल्ड, राइट? 27% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन द एग्जाम। तो कितने बच गए? 73 बच गए जो कि पास होंगे। ठीक है, 73% स्टूडेंट्स क्या होंगे? पास होंगे। अब ये जो 73% है ये कौन से हैं? जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इन तीन जगहों पे आएंगे। ये कौन सी जगह है? जो कि केवल इंग्लिश में पास है। ठीक है, ये कौन सी जगह है? जो दोनों में पास है। ये कौन सी जगह है? जो केवल मैथ्स में पास है। ठीक है, इन तीनों का वैल्यू मिला के कितना होना चाहिए? 73। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि x% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में पास है। ठीक है, अब मुझे एक बात पता थी कि भाई इस वाले सर्कल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 70। अब इस सर्कल को अगर मैं अज्यूम करूँ, ये वाला सर्कल देखो, इसमें x ऑलरेडी आ गया है, तो बाकी बचा कितना? 70 माइनस एक्स, 70% माइनस x%, वो किसका वैल्यू हो जाएगा? ओनली इंग्लिश। सिमिलरली 65 माइनस एक्स, ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ओनली मैथ्स। अब इन तीनों को मिला के 73 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा 70, we can go with this approach to like taking failed student in English, math and finding the union of the failed student after we can subtract it from 100, find net pass student। आप वैसे भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप वो भी अप्रोच भी आप सही कह रहे हो। ठीक है, आप उससे भी जा सकते हो। 65 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था? एक्स का वैल्यू आ रहा था, याद है किसी को?
how much it is coming? 7 6 x x cancel out. 135 135 so 2 62 yes 62 x is equal to 62% राइट. हाँ ठीक है. और इस 62% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखो कितना गिवन था. 248 कैंडिडेट वर पास इन द बोथ द सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो 62% ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट वाज 248. बस अब तो इजी हो गया क्वेश्चन. अब मुझे 100% निकालना मतलब टोटल स्टूडेंट. सो 1% का वैल्यू है 4. सो 100% इज 400. राइट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. ओके सो ओके अब ये वाला क्वेश्चन एक देख लो. ये इजी है. पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. तो सारी वेराइटी को गो थ्रू कर लेना. दैट्स इट. आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप टुडे. ठीक है. लो हरकिरत टेक द स्क्रीनशॉट. डन. ओके go for it. Population of a town is 50,000. It is increased by 10% in the first year and 12% in the second year. What will be the population after 2 years? See, there can be multiple approaches to solve this question. Huh? You have 5 minutes remaining. आप net effect निकाल सकते हो. Your number is increased by 10% and 12% in the second year. These kind of question we have already done. ठीक है. Initial value is 50,000. So what will be the final value? किया था हमने ऐसा क्वेश्चन net effect से. Go by the net effect. $50,000. It is increased by 10%. See, let me give you one another approach. उससे आपको सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी. कैसा कर सकते हो. मान लो कोई नंबर है मेरे पास x. ठीक है. और ये नंबर अगर 10% इंक्रीज हो गया तो मैं कहूँगा ये नंबर अपने आप का 110% हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज द नंबर इट सेल्फ इज 100% ऑफ इट सेल्फ. राइट. नाउ इफ इट इज इंक्रीज बाय 10% सो इट बिकम्स 110% ऑफ इट सेल्फ. इफ अ नंबर x इट इज डिक्रीज बाय 20%. तो अगर ये 20% डिक्रीज होता है तो ये अपने आप का 80% रह जाता है. ठीक है. सो नाउ द नंबर इज 80% ऑफ इटसेल्फ. ये चीज आई समझ में. दीज टू थिंग्स लेट मी नो दिस फर्स्ट. दीज टू आर क्लियर और नॉट? If a number is increased by 10%. Okay. Right. Now the same approach we will apply here. A number is 50,000. Okay. This is increased by 10% first, so it becomes 110% of itself. 110% means 110 by 100. ठीक है. सॉल्व नहीं करना है अभी, ऐसे ही रहने दो. ठीक है. अब अगेन फिर से 12% इंक्रीज हो गया तो ये अपने आप का 112% हो जाएगा. ठीक है. अब ये चीज सॉल्व कर लो. दैट्स इट. 0 0 0 0 कैंसिल आउट. 0 0 0 0 कैंसिल आउट. अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? 50 इंटू 112. अच्छा 50 को मैं अगर 100/2 लिख लूँ तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. ठीक है. अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया. 2 5 10 1 2 6 12 0 0 5 6 0 0. कोई गड़बड़ हुई है क्या हमसे? 1 2 3 4 1 2 3 4. So you missed 11. 2 5 10 1 2 6 12. आई missed the. ओके सॉरी 11. ओके 11 भी तो है. ठीक है. 11 भी है. मल्टीप्लाई बाय 11. मल्टीप्लाई बाय 11. So 0 0 11 6 is 66. 6 11 5 is 55. 55 plus 6 61. So 616 0 0. Correct answer. B. Okay. All right. All right. All right. ठीक है. I will share the PPT with you. So एक बार इसको ट्राई कर लेना घर पे. ठीक है. जो क्वेश्चन नहीं आएगा यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. ओके. नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है. फिर मैं लिख ले रहा हूँ. जाके आप सॉल्व कर लेना. ओके. आई विल शेयर इन द ग्रुप. एक पजल है तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा. ठीक है. कैन आंसर देयर ओनली.
All right, guys. So thank you so much. In case of doubt, you can ask directly. So till now, take care. Bye bye. You leave the session. Thank you. Thank you, everyone. Thank Excuse you, me, sir. sir. Yes. Sir, I have some formulas regarding this. Can I share this that in group too? Yes, yes. किससे regarding था? Sir, like all the things that we did today. Mhm. What you are saying? I need to share this PPT in the group. No, sir. No, sir. Actually, I'm saying that I will share the formulas regarding the topics that you have covered today. Okay, okay. Yes. Actually, formula is already covered in the PPT itself. Okay, sir. Then. PPT में मैंने फॉर्मूला डाले हुए हैं. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार. देखो, ये फॉर्मूलाज है. ठीक है, और बाकी जो बेसिक्स है, बेसिक्स मैंने स्टार्टिंग में मैंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपको ये Okay. नेट चेंज का फॉर्मूला हो गया. ठीक है. ऑल राइट. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय. Thank you, sir.